सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए थे, दैट इज व्हाट आर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, राइट? नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट आर गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया था ना? Yes, ma'am. Barriers of effective, हाँ ओके. देन व्हाट आर गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हम लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़े, व्हाट इज कम्युनिकेशन ये भी देखे. देन हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन और गिव द टिप्स फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अभी हमको ये देखना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, और टिप्स फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, सो टेल मी फर्स्ट व्हाट इज कम्युनिकेशन. बोलो, what is communication? It is the interaction of one another. Okay. Then हम Communication लोगों ने is the उसमें process of टाइप्स. sharing our ideas. ओके, तो दो टाइप्स के हमने कम्युनिकेशंस देखे. व्हाट आर दे? Verbal and non-verbal. देयर आर Or वर्बल एंड नॉन वर्बल. ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल. Yes. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसमें हमको जो रोमन फर्स्ट है इज अ कम्युनिकेशन, तो हमको वो रेफर कहाँ से करना है? क्वेश्चन नंबर 5 से. ओके, सेम एज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, जो रोमन फर्स्ट पॉइंट है वो वहाँ पे ऐड करना है. ओके, so effective communication is a part and parcel of any successful organization. A communication should be free from a barriers so as to be effective. Means communication is a two-way process, right? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की two-way process होता है. The message interpreted in the same term by the recipient. यहाँ पे एक सेंडर होता है और दूसरा रिसिपिएंट होता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज. ओके, सो गाइडलाइंस, टिप्स, वे, मीन्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए जिससे हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज अ क्लियरिटी ऑफ पर्पस. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको 10 मार्क्स के लिए आता है तो ये इनफ नहीं है, इसमें थोड़ा और ऐड करने की जरूरत होगी. समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, तो यहाँ पे सिर्फ रोमन सेकेंड गाइडलाइन टिप्स जो है जिसमें 10 पॉइंट्स ही है, ओनली 10 पॉइंट्स, वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए. ओके, तो इतना नहीं लिखना है, इसमें थोड़ा और ऐड करना है. तो मैं तुमको वो पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन ये एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, आया समझ में? yes, ma'am. तो पहले यही देखो, वरना मुझे डबल से पूरी पीडीएफ ऑन करनी पड़ेगी. सो गाइडलाइंस, टिप्स, वेज, मीन्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज द एक्यूरेसी. यूज एक्यूरेट वर्ड्स, टाइम, बॉडी लैंग्वेज वाइल कम्युनिकेशंस. एक्यूरेसी होनी चाहिए, मीन्स यूज एक्यूरेट वर्ड, टाइम, बॉडी लैंग्वेज वाइल कम्युनिकेशन. जब भी कम्युनिकेशन, एक्यूरेट वर्ड्स यूज करने चाहिए. देन क्लैरिटी, यही पॉइंट्स है उसमें भी, बस थोड़ा लेंदी फॉर्म में लिखा हुआ है. सो क्लियरिटी, बी क्लियर ऑन कन्वेइंग मैसेज वाइल कम्युनिकेशन. क्लियरली मैसेजेस जो भी हम सामने वाले को देना चाहते, बी क्लियर होके बोलना चाहिए. सो बी क्लियर ऑन कन्वेइंग मैसेज वाइल अ कम्युनिकेशन. देन read more, extend the vocabulary, knowledge, subject matter, language by more reading. So always read more, extend the vocabulary, means हमारा जो knowledge है वो extend करना चाहिए.
vocabulary, then knowledge, subject matter, language by more reading. Then listens more. Communication is a two-way process. ये हमेशा ये पॉइंट याद रखना है. Communication is a two-way process. Listen more to better understand other in verbal communication. In written, try to listen the written line by others. Okay, listen more means it is a two-way process. अगर हम listen more ज्यादा सुनते हैं तो betterly understand कर सकते हैं. वाले की बात नहीं सुन रहे और हमारा ही बस बोल रहे तो हमको समझ में आएगा नहीं. तो फर्स्टली हमको बहुत से सुकून से सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है. लिसन मोर टू बेटर अंडरस्टैंड अदर इन वर्बल कम्युनिकेशन. इन रिटर्न में ट्राई टू लिसन द रिटर्न लाइन बाय अदर्स. वहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उस पर फोकस करना है. तो ट्राई टू लिसन द रिटर्न लाइन बाय अदर्स. देन नेक्स्ट इज थिंक मोर. Think more, think before writing or speaking, that is before communication. कोई भी बात कहने से पहले सोच के बोलनी है, बगैर सोचे समझे कुछ भी बक नहीं देना. समझ में आया? So think more before writing or speaking, that is before communication. Hope you understand. So next point is plan more. Means plan more before writing or speaking, that is before communication. Same point है जैसे मैं यहाँ पे बोली हूँ think more before communication, वैसे plan more before communication. कुछ भी कहने से पहले, written करने से पहले plan करना चाहिए. Okay, next is a standard more. Standard more, set high standard in communication. ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, हमारी स्पीकिंग में कुछ हाई वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ऐसे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगी वो कम्युनिकेशन. न्यू न्यू वर्ड्स हम लोग हमारे लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए. सो स्टैंडर्ड मोड, सेट हाई स्टैंडर्ड इन कम्युनिकेशन बाय पोलाइटनेस, प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक्टिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ओके, तो बात करते दफा टोनिंग इज इम्पॉर्टेंट. किस टोन में बोल रहे, थोड़ा पोलाइट होके बात करनी चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए. देन एक्टिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए, ना कि निगेटिव. ओके, so this is a standard mode. So next is a flexibility. Be open minded to accept the changes for a impressive communication from any source, especially listener or a communication. So flexibility means open minded होना चाहिए. Be open minded to accept the changes for a impressive communication from any source, especially listener or communication. Then satisfy receiver. Try to satisfy need of receiver. ये ट्राई करना चाहिए हमेशा कि सामने वाले को क्या चाहिए. Try to satisfy the needs of receivers. Okay, then value of receiver. Respect, value the receiver. Important. So these are the guidelines for a effective communication. Hope you understand. Point समझ में आए ये वाले? Yes, ma'am. Okay. इसके आगे कंटिन्यू करना है. ये वाले पॉइंट्स पहले लिखो, वो वाले पॉइंट पहले लिखो, एज यू विश. आप लोग को जो पहले लगता है वो लिख सकते. So effective communication is a part and parcel of any successful organization. A communication should be free from barrier so as to be effective. Communication is a two-way process where the message sent by the sender should be interpreted in the same term by the recipient. The characteristics of effective communication are as follows. ये याद रखो कि ये जो पॉइंट है आप लिखेंगे तो जो कम्युनिकेशन का फर्स्ट रोमन फर्स्ट मैं बोल रही हूँ ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, वो रेफर करना है वहां से. तो उसमें ये पॉइंट लिखने के बाद आप लोग
या तो ये गाइडलाइंस के जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं. ओके, अगर ये भी नोट्स के अंदर जो गाइडलाइंस, टिप्स, वेज, मीन्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये लिख रहे हैं तो भी आपको ये पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, देन वो लिखना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज द क्लियरिटी ऑफ पर्पस. The message to be delivered must be clear in the mind of sender. Okay, message to be delivered, जो भी हम message deliver करें, must be clear in the mind of sender, the person to whom it is targeted, and the aim of the message should be clear in the mind of the sender. तो जो भी हम message सेंड कर रहे हैं सेंडर को वो क्लियर होना चाहिए, उसको समझ में आने जैसा मैसेज होना चाहिए. ओके, जैसे ये पॉइंट आई थिंक तुमको इसमें भी है, क्लियरिटी, बी क्लियर ऑन कन्वेइंग मैसेज वाइल कम्युनिकेशन. तो इंस्टेड ऑफ दिस ये मैसेज, ये वाला पॉइंट भी आप लोग वहां पे ऐड कर सकते हैं. देन कंप्लीटनेस, द मैसेज डिलीवर शुड बी इनकम्प्लीट, should not be incomplete, sorry. So the message delivered should not be incomplete, means हाफ मैसेज देंगे तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. तो शुड नॉट बी इनकम्प्लीट, वो पूरी तरह से कंप्लीट मैसेज है. सो इट शुड बी सपोर्ट बाय फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन. इट शुड बी वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. नो assumption should be made by the receiver. So it should be सपोर्टेड बाय फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करके ही कुछ हम जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, नॉट कि इनकम्प्लीट मैसेज वहां पे देना चाहिए. ओके, the next is the consciousness. The message should be conscious. It should not include any unnecessary detail. ओके, वहाँ पे कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स जो भी होंगी वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है मैसेज के अंदर. इट शुड शॉर्ट एंड कंप्लीट. हम लोग जैसे कम्युनिकेशन में पढ़े हैं कि हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं वो शॉर्ट हो, नॉट कि लेंदी फॉर्म में नहीं देना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, ऑडियंस जो भी सुनने वाला है, रिसीवर है, वो बोर हो जाता है. तो शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करनी चाहिए. तो मैसेज शुड बी कॉन्शियस. इट शुड नॉट इंक्लूड एनी unnecessary detail. It should be short and complete. Okay, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज द फीडबैक. आप लोग सुन रहे हैं ना? Yes, ma'am. Okay. Next is a feedback. Whether the message sent by the sender it is understood in same term by the receiver. Feedback means whether the message sent by the sender is understood in same term by the receiver or not can be judged by the feedback received. The feedback should be timely and impersonal. Okay, it should be specific rather than the general. Next is the empathy. Empathy with the listener is essential for a effective verbal communication. The speaker should step into the shoes of the listener and is sensitive to their needs and emotions. This way he can understand things from their perspective and make communication more effective. So empathy with the listener is essential for a effective verbal communication. Okay, ये effective के लिए verbal communication. The speaker should step into the shoes of the listener and be sensitive to their needs and emotion. Next point is modify the message according to the audience. The information requirement by different people in the organization differ according to their needs. So modify the message according to the audience. जो भी हम बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे मॉडिफाई करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को. So the information requirement by different people in the organization differ according to their needs. Okay, means what is relevant to the middle level management might not be relevant to the top level of management.
means use of jargons should be minimized because it might lead to misunderstanding and misinterpretation. Jargon means is a formal language unique to a specific discipline or a field. मीन्स हम जैसे कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है इज अ कॉमन इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना स्लैंग इज अ कॉमन और इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इज मोर लाइकली टू बी स्पोकन देन written. So use of jargon should be minimized because it might lead to misunderstanding or misinterpretation. The message should be modified according to the needs and requirement of the targeted audience. तो जो भी मैसेज है उस मैसेज को अकॉर्डिंग टू ऑडियंस वहाँ पे हमको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करना चाहिए. नेक्स्ट इज अ multiple channels of communication. For a effective communication, multiple channels should be used as it increase the chance of clarity of message. जब हम वहाँ पे effective communication में channels use करते should be used at it increase chances of clarity of message. वो increase करता है clarity of message. The message is reinforced by using different channels and there are less chance of deformation of message. वहाँ पे message का जो deformation है वो होना कम होता है, less chances होते हैं deformation के. Okay? And last is a make effective use of grapevines, means informal channel of communication. So the employees and managers should not always discourage grapevine. They should make effective use of grapevine. The manager can use grapevine to deliver from a formal messages and for identification of issues which are significant for the employees. And manager can get to know the problems faced by the employees and can work up it. So these are the guideline for a effective communication. मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगी ये ऐड करना है नोट्स के अंदर. ओके Okay, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस गिव इट्स importance. So self-awareness is means understanding own personality, value system, belief, natural inclination, then tendencies. So self-awareness means self reflection of individual for a society of a group of people. Okay, self awareness क्या है रिफ्लेक्शन है सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ सोसाइटी ऑफ ग्रुप और ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल के. सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस गिव इट्स इम्पोर्टेंस. हमको वहाँ पे फर्स्टली ये एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस देन उसके इम्पोर्टेंस ऐड करने. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एडवांटेजेस सिग्निफिकेंस देन फीचर्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू मेक वन एज अ बेटर पर्सन. ओके तो हमको दोनों भी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है यहाँ पे. तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ओनली इम्पोर्टेंस भी पूछ सकता है और एडवांटेजेस भी. ओके so we will see in the next lecture. Okay टाइम अप हो चुका है इसलिए अभी तो एक्सप्लेन करके होगा भी नहीं है कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस का. वी शुड स्टॉप हियर.